Yes, students. Green's theorem का next question. Apply Green's theorem and claim to evaluate this integral where C is the boundary of the surface used by the x-axis and the semicircle. Yes. Now we have this integral here m equals to this 2x square minus y square and n is x square plus y square. Now by Green's theorem, m dx plus m dy equals to original curl m by curl x minus of curl m by curl y dx dy. Clear? Now हमें Green's theorem यूज करके इसको वैल्यू करना है, इसलिए ये डबल इंटीग्रल वैल्यू है. Here curl m by curl y आएगा आपके पास माइनस ऑफ 2y एंड curl m by curl x आएगा आपके पास 2 of x. और बाउंड्री हमें जो कर्व सी वो क्या है, यहाँ पर बात कर लेते हैं. Semicircle. A bounded by curve x and semicircle. Semicircle y equals to under root of 1 minus of x square. Squaring both sides, y square equals to 1 minus of x square, which implies x square plus y square equals to 1. ये यूनिट सर्कल बनेगा विद सेंटर एट द रीजन. ये माइनस 1 0 डिवाइड होगा, ये 1 0. मीन्स हमारी कर्व होगी दिस A to B, यहाँ पर A O B and then again this direction. ये होगी हमारे y equals to under root of 1 minus of x square. Here now हमने वैल्यू करना है इस कर्ल m by कर्ल y, कर्ल m by कर्ल x 2x minus 2y dx dy. जो हमारी y की लिमिट्स है उसके लिए हम वेरिएबल लिमिट्स इस रीजन में हम एक वर्टिकल लाइन ड्रा करेंगे. हम रीजन में एंटर कर रहे हैं y इक्वल्स टू 0 पर एंड लीव कर रहे हैं अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ऑफ x स्क्वायर. तो ये आ जाएगा हमारा y इक्वल्स टू 0 टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ऑफ x स्क्वायर एंड x वेरी कर रहा है हमारा -1 से 1. तो ये इक्वल्स टू हो गया -1 से 1 y इक्वल्स टू 0 टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ऑफ x स्क्वायर. तो कॉमन ले लेते हैं, ये x प्लस y dx dy dx टू -1 से 1 विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट किया xy प्लस y स्क्वायर बाय 2 लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 1 माइनस ऑफ x स्क्वायर x इक्वल्स टू 2 -1 से 1 y की जगह पर पुट किया x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ऑफ x स्क्वायर प्लस y की जगह पर अगेन पुट किया 1 माइनस x स्क्वायर की होल स्क्वायर बाय 2 dx. ये बन गया आपके पास -1 से 1 2x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ऑफ x स्क्वायर dx. 2 इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया दिस टर्म एंड अगेन प्लस -1 से 1 2 इंटू अंडर रूट ऑफ, ये 2 के साथ में कैंसिल हो जाएगा 1 माइनस x स्क्वायर बाय 2 रह जाएगा. तो ये रह गया आपके पास 1 माइनस x स्क्वायर बाय 2 dx इक्वल्स टू, फिर हमारे पास एक फॉर्मूला आता है fn x f dash x dx. मींस इस फंक्शन का अगर साथ में डेरिवेटिव है तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है fn plus 1 x upon n plus 1. तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 minus x स्क्वायर की डेरिवेटिव क्या है -2x. हम माइनस यहाँ पर लगा रहे थे माइनस वहां पर हो गया. तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ 1 minus x स्क्वायर की पावर 1/2 plus 1 3/2 upon 3/2 plus
x की वैल्यू x 1 के इंटीग्रेशन x माइनस ऑफ x क्यूब है 3 -1 से 1 -1 से now -2/3 अपर लिमिट पुट की 1 - 1 0 माइनस लोअर लिमिट पुट की -1 यहाँ पर 1 - 1 ये भी 0 प्लस अब यहाँ पर 1 पुट किया -1 ये भी 0 देन नहीं आएगा अपर लिमिट पुट की 1 - 1/3 माइनस करके लो लिमिट पुट की यहाँ पर -1 यहाँ पर -1 की क्यूब -1 एक क्यूब माइनस ये प्लस 1/3 -1 मीन्स 2/3 माइनस यह आएगा आपके पास -3 + 1 मीन्स -2/3 2/3 plus 2/3 equals to 4/3. This is our answer. क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। होप सो स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। थैंक यू।